नहीं, शेड्यूल यहाँ शेड्यूल कैसे करेंगे, ये तो डिपेंड्स, डायनामिकली होगा। शेड्यूल तो स्टैटिक हो गया ना, इस टाइम पे ये होगा, ये तो डायनामिक होगा, मतलब जब 70% क्रॉस होगा तब एक स्टार्ट होगा, ठीक है। सो चेक इट, what happened, we are going to create one EC2, fine, then we are going to install our application, then we are going to create template or image. Initially we are going to create image, but nowadays it is template. What is template? हाँ, जैसे एक blank form, एक format. In Windows it is template. Template means all information is there. So depends on that information, Autoscale is going to launch one EC2. So same to same machine is going to provide, fine. But right now we are going to create Autoscale using minimum, suppose 2 instance, and maximum suppose 5 instance. Another option is there, a desired option. Desired, this value, desired value equal to minimum or more than minimum but less than maximum. Okay, I am going to use desired 3. What is the meaning? Suppose I use desired equal to 3. Okay, what happened? Starting, it is going to start, beginning, it is going to start 3 instance. Okay, then it is going to check what is the status. Depends on status, either it will move to 2 instance, 1 instance down, or it is moved to 3 to 4. Depends on the requirements. Starting point 3 instance. So you cannot utilize less than minimum, or you cannot utilize more than maximum. Equal to minimum or less than maximum. So I am going to use same to same value, desired 2. So 2 instances is going to start. Okay. Today we are not going to use that CPU utility is 70% and then later. Okay. First you clear it. Today our target is I am going to create minimum 2, desired 2, maximum 5. So 2 instance should be run. Once 2 instance is running, I am going to terminate 1 instance. What happened? Autoscale is going to check it, na? I informed to Autoscale minimum 2 instance should be run. Now what is the situation? 1 instance is running, 1 terminated. So Autoscale is going to check up to a certain time. Okay, you can set it. By default 5 minutes is there. Testing purpose we are going to set 1 minute, 60 seconds. So after 60 seconds, Autoscale check it. Requirement 2, running 1. So Autoscale is going to launch 1 instance. Understand? Then I am going to drop both the instance. Autoscale is going to check after 1 minute 1 instance, again after 1 minute 1 more instance. Automatically Autoscale try to maintain minimum 2 machines. Understand? So this is our requirement. Okay, once your Autoscale and others is clear, then we are going to continue. When it is going to scale up? When existing machine CPU utilities cross 70%. Okay, and continue 5 minutes more than 70%. Understand? Suppose suddenly for few seconds it is crossed 68 to directly 80%. Okay, after 30 seconds again it is down to 60%. So Autoscale is going to check, continue 5 minutes. If it is more than 70%, 5 minutes, last 5 minutes more than 70%, then Autoscale is going to start one more machine. Otherwise what happened? Autoscale is going to start, again it is down, stop. Okay, unnecessary. So we are going to check it. It should be more than 70% and continuously last 5 minutes. Then Autoscale is going to take the decision, right? So let's see. We have to create one EC2 and we assume that app already installed. Okay, now we are going to create one template and then my prerequisite is over. Now move to Autoscale and we have to mention each and everything of Autoscale, and we have to inform to Autoscale whenever you launch any instance, launch from where?
from that template. Okay? Because inside of that template, my application information is there. Clear? So let's see practically. टेम्पलेट पढ़ाने का कुछ नहीं है, अभी टेम्पलेट बनाएंगे. नहीं नहीं, इसके अंदर बिलिंग ऑप्शन होता है, मैं दिखाता हूँ. 695. Ayush, OP in your group. CP, not OP, CP. That's true. Sir, so auto scaling basically supports load balancing. No, not load balancing, more than load balancing. Load balancing is static and auto scaling is dynamic. Load balancer, if Okay. you mention 2 machine only, always it is 2 machine. Auto scaling, we have to mention minimum, maximum. Automatically it is going to scale up. Okay. So what is the use case? I mean, in which case should we use auto scaling and Say Flipkart, Amazon, railway reservation, airlines reservation. We don't know how many people are there, how many end users are there. So if I okay, mention okay, 5 machines behind the load balancer, we have to pay for 5 machines. But if I am going to use 2 machines minimum and 5 machines maximum, then depends on the requirement, machine is going to scale up and scale down. We have to pay okay, less. okay. Load balancer means it is a fix. We have to pay It's 24 by 5 machines. it, But it is here it is, static. Basically. here it is 24 by 2 machines, and other machines maybe 2 hours, 3 hours, 4 hours. Okay. Hmm. So let's Okay. launch one instance. Simple one instance. Amazon T2 micro key pair, any key pair, because I am not going to connect it. Networking, default VPC, subnet, say A, public IP enable, security group, select any security group as per your requirement, hard disks and others, applications, launch instance. Just assume that our application is already installed here. This is my instance and application already installed. Sir, creating security group, there are not any costs, right? No, security group, key, these are not cost. Oh, आयुष को बिल देखना था ना, ये अपना अकाउंट में जाओ, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट. देखिए ये बता रहा है, अभी मेल भी आएगा. यहाँ तुम बिल्स में जा सकते हो, बिलिंग्स एंड पेमेंट दिखा रहा था. फर्स्ट मार्च टू 31 मार्च जो मैं यूज़ करूँगा, अगर कुछ ज़्यादा यूज़ हो गया तो यहाँ बिल होगा. उन्होंने देखो AWS ने एक लिमिटेशन दे के रखा है, ठीक है, 1 महीने में इतना तुम यूज़ कर सकते हो. उससे अगर ज़्यादा हुआ तो हाँ, तुम फ्री टायर पे जाओ, पूरा लिखा है लिमिटेशंस क्या क्या है. यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जाता है, बिलिंग क्या है क्या नहीं है. Instances we can create how much ever. You can create multiple instances, no issue.
Suppose today you create 10 instance and use 1 hour. So 10 hours is over. Within your month some limitations are there. Second day you didn't use any instance. Third day didn't use any instance. Okay. Or daily basis you are using 2 hours, 1 instance, 2 instance. It is going to count how many hours you are active. If you stop the instance, it is not going to connect But anything. sir, for free account it is limited, na? Free account some limitations are there. जब भी बनाओ ना, बनाने के बाद ये कहाँ से कहाँ चला Sir, गया. if it is getting a stop, then no billing. Check it, my instance is running. Okay, as per our documentation, what is our requirement? Instance to template, template to autoscale informations. So my instance is ready. Now I am going to create template. If you check here, launch template, this is one options. So this is my instance, action, then image and template, create image, create template from instance. Okay, create template from instance. My template name tmplt for autoscale. Version description, anything. Autoscaling guidelines not required, tag not required, AMI same AMI, instance type you can change here in template, key pair, network settings, security group, select security group by default. Everything is accepted from instance. Okay, everything is accepted from that instance. All informations are there. Create launch template. Now if I back to launch template here, check it, here it is showing tmplt for AS. Okay, default version 1. In future if I change something, version 2, version 3, okay, we can manage it. So my template is ready. Now I just back to instance and terminate my original instance, because autoscale is going to start. Okay, no need to start manually anything. So I just create the instance, deploy the application, test everything. Once everything is okay, we create one template. Fine. Now I am going to configure autoscaling. This is autoscaling. Autoscaling group. Yeah, terminated. It will take some time, na? Shutting down, then terminated. Create autoscaling group. But sir, you have not written anything in templates, how you will take action. Didn't write anything else? Template means limitation, like minimum to maximum. अभी आएगा, अभी आया नहीं. तो आप ऐसे ही बिना वो तो ऑटोस्केल में बताएंगे ना, 2, 4 जो भी होगा. वो तो मैं टेम्पलेट मतलब एक कॉपी लिया उस मशीन का, उसको मैं इसको बताऊंगा अभी, उसी टाइम बताना है ना इसको. That minimum maximum, that is not a part of template, that is part of autoscaling. Create autoscaling group. Click here. So my autoscaling group name, launch template, it is asking. So click here, this is my template. So I am informing to my
auto scaling that this is my template. Whenever you launch any instance, launch from this template. Fine? Clear हुआ? नहीं सर, मुझे लग रहा है ना कि टेम्पलेट जैसे आप लिए, ठीक है, तो सर उसको ब्लैंक रखने का क्या मतलब है? Why blank? ब्लैंक कहाँ रखा मैंने? उसमें आपने कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए नहीं, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? मतलब एक टेम्पलेट जैसे कॉपी है, राइट? कॉपी ऑफ द इंस्टेंस. अच्छा, कॉपी ऑफ द कॉपी ऑफ द इंस्टेंस. जो इंस्टेंस मैंने बनाया उसी इंस्टेंस में मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, उसको मैंने देख लिया, टेस्ट किया, सब ठीक है, उससे टेम्पलेट बना लिया. अच्छा, टेम्पलेट में नथिंग बट ए कॉपी ऑफ द इंस्टेंस. कॉपी ऑफ द इंस्टेंस नहीं है. कॉपी ऑफ द इंस्टेंस मतलब इमेज. देन टेम्पलेट मतलब एक ब्लैंक फॉर्म जिसमें पूरा सब कुछ है. मतलब इस इंस्टेंस का ये वैल्यू जो इंस्टेंस में था ना, पूरा वैल्यू वो ले लिया वहाँ से. अब जब वो इंस्टेंस बनाएगा इसी वैल्यू से ही बनाएगा ना. ठीक है? अच्छा, उसमें इंस्टेंस का वैल्यू टेम्पलेट मतलब एक ब्लैंक फॉर्म होता है, आपने फिलअप कर दिया, आपका डिटेल्स है. ठीक है? अभी देखिए मैंने टेम्पलेट्स बता दिया. नाउ आई ऑलरेडी इन्फॉर्म इट. सो नेक्स्ट, नाउ चूज इंस्टेंस लॉन्च ऑप्शंस. Networking by default your VPC, because VPC we are going to learn maybe after 2 classes. Availability zone, you can choose A and B, not in C. Then it is asking balance best effort, balanced only, availability zone distribution. Whenever it is going to create the launch the instance, one instance in A, one instance in B. Okay, not both the instance in A. So balance. Okay, Autoscale is going to balance it in, that is zone wise. আবার বলছি, আবার দেখাবো, চিন্তা নেই. Next, then load balancer is required. I am going to attach a new load balancer. Attach a new load balancer, application load balancer, right? Load balancer name, by default it is going to accept the same name as the group -1. Internal or internet facing? Internet facing, worldwide. Internal means intranet wise. Then VPC. VPC details is okay. Port 80, HTTPD, or you can choose anything. Then these are not required, VPC, because right now you have no idea about VPC and ATAS. So these are also not required. Health check, you can mention here, health check. That is, it is going to check the health of your instance. Or see, this is 300 seconds. 300 seconds means 5 minutes. I am going to use 60 seconds. So if 60 seconds health is down, then it is going to take effects. Next, अभी देखिए आपका मिनिमम मैक्सिमम सब आ जाएगा. क्या हो गया? One or more required field missing. Which one field missing? फिर भी कुछ मिसिंग है. अच्छा. Create a target group. By default it will accept the target group name. Target group means in your load balancer also you face group. Group means collection of machines, collection of nodes, collection of instance. Suppose right now we mention a load balancer. Right now under group how many machines are there? 2, sometimes 3, sometimes 4. So this information is going to accept by the load balancer, and it is going to distribute within 4 machines. Now it is 4 to 3, so it is going to distribute within 3 machines. Okay, so this group name we have to mention here, target group name. স্যার মানে এই টার্গেট গ্রুপ লোড ব্যালেন্সার যে পার্ট গুলো one minute. हाँ बोलिए. We didn't create any target group. We started one group, not target group. Autoscaling group. Last class, that concept, same concept wise it is going to create the target group. Why target group is required?
if multiple machines is there and any load balancer is there, so load balancer is going to know the target group name. Okay, how many machines are there? For load balancer purpose, it is fixed, 2 machines, 3 machines. But auto scaling purpose, it is dynamic, 2 to 5. Because if I mention minimum 2 and maximum 5, then it is going to dynamic. Sometimes 2, sometimes 3, sometimes 4. But we have not created a What? machine for ALB means load balancer. सर टारगेट ग्रुप के समय 2 मशीन बनाया था. अभी there is no any machine we have created ना. तो हुआ नहीं, अभी तो होने तो दो. खाना बना ही नहीं, अभी चखना स्टार्ट हो. होने तो दो, इसको होने दो, फिर बताओ ना. इसको होने दो. आधा में खाना है, पूछ रहा है नमक कैसे हुआ है. अभी खत्म नहीं हुआ. चेक इट. डिजायर्ड कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, जो डिस्कस किया. স্যার একটা মিনিট, এই মানে বেসিক্যালি টার্গেট গ্রুপের যে রেজিস্টার্ড টার্গেট গুলো যেটা আমরা ম্যানুয়ালি দিচ্ছিলাম EC2 এই সরি অটো স্কেলিং এর ক্ষেত্রে টার্গেট গ্রুপের রেজিস্ট্রেশনটা ডাইনামিক হবে, কখনো দুটো কখনো পাঁচটা. রাইট রাইট. ওখানে স্ট্যাটিক ছিল, এখানে ডাইনামিক. আর লোড ব্যালেন্সারটা লোড ব্যালেন্সারের কাজই করবে, ইট উইল ডিস্ট্রিবিউট দ্য লোড অ্যাক্রস দ্য अवेलेबल EC2 इंस्टेंसेस. हाँ राइट. चलो ये समझ में आया ना. दिस वन क्लियर. मिनिमम मैक्सिमम डिजायर्ड. नाउ ऑप्शन इज नो स्केलिंग पॉलिसी एंड टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी. फर्स्ट ऑप्शन इज नो स्केलिंग. दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू स्केल अप और स्केल डाउन. Just testing purpose, it is going to create 2 machines. If I down 1 machine, it is going to start another machine. Right? This portion. But if I choose target tracking scaling policy, what is the meaning? That is when it is going to scale up. Scale up कब होगा वो बताना है मुझे. मैंने क्या बताया था? If CPU utility is 70%, 50%, 60% condition. So हमें बताना है यहाँ पर टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी. कुछ नाम देना है. एवरेज CPU यूटिलाइजेशन मैं यही चूज किया. टारगेट वैल्यू 50% और 5 मिनट देखेगा. मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये बाद में करेंगे. मैं ये कर रहा हूँ, पहले इसको समझो, नहीं तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे. नाउ आई एम यूजिंग नो पॉलिसी. दैट मीन्स नो स्केल अप, नो स्केल डाउन. Only I want to check Autoscale is going to launch 2 machines because the instance which I created, instance to template, I terminated that instance, right? So right now Autoscale is going to launch 2 instances. Fine. And if I drop 1 instance, if Autoscale is going to start another instance, that is 2 instances always running, then my Autoscale concept wise it is okay. Then we will check tracking option. Okay, so let's check it. It is default, additional setting is not required. Next, review, create auto scaling group. It is updating the capacity, back to instance, and check it. 2 machines are running. Fine. This is my old machine, I terminated it. Now what is my target? If I am going to drop this machine, I am going to shutting down 1 machine. After machine down, okay, Autoscale is going to check 60 seconds because we mentioned 60 seconds. After that, it is going to start another one. So both the machines are terminated, 2 machines.
जैसे जब तुम इंस्टेंस बना रहे हो तुम्हारा क्वेश्चन है एक 8 GB है उसमें, ऑलरेडी 8 GB है और बीच में हमें ऐड वो 8 GB को भी तुम बढ़ा के 10 GB 20 GB कर सकते हो। EBS बोल और तुम्हारा ये हो गया, उसके बाद भी मैंने वॉल्यूम ऐड करके दिखाया था 5 GB का, वही तो वॉल्यूम ऐड कर सकते हो ना। वॉल्यूम क्रिएट किया था, फिर वॉल्यूम ऐड किया था। ये 60 हुआ था कि 5 मिनट हुआ था पता नहीं, वेट करो थोड़ा देखो। चेक इट, वन पेंडिंग। ये T2 मशीन ही स्टार्ट किया ना, क्योंकि टेम्पलेट में मैंने T2 ही बताया था। अगर वहाँ T3 बताता तो T3 स्टार्ट करता। वो तो सर जो फर्स्ट जो क्रिएट किए थे उसी का नहीं, इंस्टेंस बनाने के बाद भी जब आप टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं ना, तब भी एक ऑप्शन दिया था कि कौन सा मशीन करना है, T2 ही करना है या आप चेंज करना चाहते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो एप्लीकेशन आपने T2 के ऊपर बनाया, वहाँ से टेम्पलेट बना लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि T3 से लॉन्च हो, तो चेंज कर दो। इसको जब डिलीट करना है ना, पहले ऑटो स्केल को डिलीट करना है। जैसे इंस्टेंस डिलीट कर दिया और निकल गया, ऑटो स्केल रह गया, तो होगा क्या, बनाते रहे। वो फिर इंस्टेंस बना देगा। बाप रे बाप, कितना टाइम ले रहा है। चलो डिलीशन स्टार्ट करते हैं, दिखा देते हैं, फिर एक बार और एक बार दिखाते हैं। ऑटो स्केलिंग, पहले इसको डिलीट करना है। इफ़ यू क्लिक हियर, scaling limit and others is going to show here. Okay, all information, please check it, all these informations. If I want to delete, select it, action and delete. After creation of autoscaling group also we can make any modification. हाँ, Delete option. I'm deleting this auto scaling group. After that you have to back to instance and terminate. सर पानी मांग रहा है। Hmm? So auto scaling group, deleting. This is the load balancer created by the auto scale. If it is deleted automatically, fine, otherwise still deleting. Instant also deleted. So auto scaling purpose, once more I am going to show you the steps. First we have to create one instance, and then we install and configure our application, okay, on that instance. That is, everything is ready, we test it and finalize it. Fine. Once it is okay, we have to create template from that instance. How to create? From action, image and template, create template from instance. You have to select your instance and then create template. Right now
under launch template, this is one template. Just now I created this template from my instance. Okay, this is the template. Template is going to create under this your account number as a root user. Okay, template creation over. EC2. Ah? Is it same as image? No. When you create one EC2 instance, what is the size? 2 GB, 3 GB, 4 GB? Because OS is there, your application is there. If you create one image, that is the same as ISO image type. That is also 4 5 GB. Okay? Template, just information of that. EC2 machine, this application, this is the IP, this is the machine. Okay? Just few KB. So that initially AWS started this auto-scaling through image. Okay, but it is going to consume more space, so they change it. Okay, they rewrite these auto scaling options again and they change it from template, because template is lightweight. Everywhere we should use template only when we are migrating one server from here to Singapore that we were doing yesterday, right? That we can do from template also, right? Fine, you can create it, but after that template, when you try to create one EC2 instance, is it possible to create EC2 instance from template? Yeah, we are creating that, sir. We are creating from template only, na? कहाँ से template use किया? अभी template use कर रहे हैं. वो तो ऑटो स्केलिंग यूज कर रहा है. आप खुद कोई EC2 बना सकते हो टेम्पलेट से. हर चीज़ का एक रूल होता है. ठीक है, आपको दाल चावल दिया, आपने हाथ से ऐसे ऐसे खाया. चाय दिया, वो भी हाथ से ऐसे ऐसे खाएंगे चाय उठाकर, नहीं ना. तो हर चीज़ का एक रूल होता है. हाँ, हम सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, ये आपका राइट है. क्योंकि आप जब सीख रहे हैं ना, जितना क्वेश्चन यहाँ आ रहा है ना, मतलब आप उतना डेप्थ में जा रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं. क्वेश्चन आना चाहिए. ठीक है, कुछ क्वेश्चन सिली क्वेश्चन होता है, कोई मैटर नहीं, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए. सिली क्वेश्चन सुन के कभी कभी मैं डांटता हूँ थोड़ा, फिर भी आना चाहिए क्वेश्चन. ठीक है, पूछो मत, सोचो कि ये पूछे कि ना पूछे, पूछ लो, क्लियर कर लो, मन में वो शंका मत रखो. ठीक है. So templates are specifically used for অটো স্কেলিং আদার কিছু ইউজও আছে, বাট EC2 বানাতে পারবে না, instance বানাতে গেলে AMI চাই. AMI চাই. Okay, so template is ready. Now from this template I am going to create auto scaling group. So auto scaling group means I am going to inform to this auto scaling group that this is minimum, this is maximum, this is desired. So auto scaling is going to launch instance as per these instructions. And from where it is going to launch? Template. Template is the source and this is the criteria. The properties, I already set it. Minimum 2, maximum this. Okay. So let's see once more. Net slow ba onno kichu ke jane. Okay, create auto scaling group. My auto scaling group, my ASC. Launch template. Which template? This one. Fine. First option over. Default version and others, these are not necessary. Next. Now choose instance, launch options. Check it. It is going to ask networking. That is when it is going to launch, where it is going to launch, in which VPC. Because when we are going to learn VPC, then we have to mention it is going to launch inside of our VPC. Okay? This all auto scaling groups, everything should be in the same region, right? Same. Region. We can't do it in another region. Okay, region wise that is through possible, not from auto scale, that is through DNS. ধরো তোমার একটা মেশিন আছে মুম্বাইতে, একটা মেশিন আছে সিঙ্গাপুরে, আমি দুটোর মধ্যে লোড ব্যালেন্সিং করব, Auto scaling group. অটো স্কেলিং দিয়ে হবে না, তার জন্য অন্য কিছু হবে. Main পার্থক্যটা কি, like auto scaling আর load balancing? স্যার অটো স্কেলিং শুধু মানে অ্যাক্রস ডিফারেন্ট অ্যাভেলেবিলিটি জোনস উইদিন দ্য সেম ভিপিসি ডিস্ট্রিবিউট করবে, Right. তাই তো? হ্যাঁ, লোড ব্যালেন্সার অটো স্কেলিং. ও যেটা বললো সেটা হচ্ছে অটো স্কেলিংটা উইদিন আ সেম রিজিয়ন
সিঙ্গেল ভিপিসি মাল্টিপল রিজিয়ন, তোমার কাছে আছে না রিজিয়ন, মাল্টিপল জোন, নট রিজিয়ন, মাল্টিপল জোন, জোন এ বি উইদিন দিস। বাট তোমার কোশ্চেন ছিল, ইয়োর কোশ্চেন ইজ রিজিয়ন টু রিজিয়ন, that is possible through route 53. Okay, high level concept. Okay, and another question is load balancer and auto scaling. Load balancer, suppose you started 5 machines behind load balancer. Okay, behind load balancer 5 machines are running, and it is a Flipkart related, this type of e-business. So right now 5 machines are used because load balancer is there, it is going to distribute 5 machines. But how much is used? 5%, 10%. Unnecessary, you have to pay 5 machines for 24 hours. Okay? Because static 5 machines are running. If it is auto scaling, if you mention 1 machine is minimum and maximum 10 machines, okay, whenever it is required, whenever this first machine CPU utility cross 70%, 50%, anyhow anything, automatically launch another instance. So first machine you have to pay for 24 hours. Second machine, suppose it is going to run only 5 hours, then it is down. So only 5 hours purpose. So cost minimization, to the point utility. Okay? So auto scaling means dynamic node. Load balancer means static node. Okay, so VPC, we have to choose the same VPC, availability zone A and B, and then balance best effort, that is whenever it is going to start any instance, one instance in A, second instance in B. Auto scale is going to launch na different zones. So auto সেম জোনে হতে পারে, কিন্তু তার জন্য দেখো বেস্ট এফোর্ট, ব্যালেন্স বেস্ট এফোর্ট। It is so auto scale, whenever it is going to launch, it is going to launch in different zone. Okay, not all the node in one zone, right? Then next, load balancer is required, attach application load balancer, not network. Load balancer name automatically accepted. তাতে পয়েন্ট হবে না, লোড ব্যালেন্সার দিতে হবে তোমাকে, সব দিয়ে রেখেছে। ও যারা ডেভেলপ করেছে তারা অনেক কিছু করেছে না। এবার দেখো ডেভেলপার আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে তফাৎ আছে। মাল্টিপল নোড তুমি কি করে অ্যাক্সেস করবে? ওই জন্যই এক্সিস্টিং অ্যাটাচ করতে পারো, নো লোড ব্যালেন্সার বলছে, এটা হয় না। এই দুটোর মধ্যেই কাজ হয়। Existing already on load balancer is there. Then it will be a static group, no? Because for load balancer will create groups which will be static. Then No. You can create one load balancer and then you can utilize here. তুমি ট্রাই করবে একটা লোড ব্যালেন্সার বানিয়ে, লোড ব্যালেন্সার তো জানো। একটা load balancer যদি বানাই তাহলে তিনটে ইনস্ট্যান্স ওখানে আমি কিছু দিনই শুধু লোড ব্যালেন্সার বানিয়েছি উইদাউট এনি ডিক্লারেশন। ওই লোড ব্যালেন্সারটাকে এখানে ইউজ করব। ওকে, নেক্সট অপশন অ্যাপ্লিকেশন লোড ব্যালেন্সার। লোড ব্যালেন্সার নেম internal, internet facing, VPC is okay, port 80 default routing group তুমি দিতে পারো। any routing group যদি ক্রিয়েট করতে চাও, ফরওয়ার্ড করতে চাও। VPC no VPC, এই টাইমটাকে কমিয়ে দাও, 30 সেকেন্ডস করে দিলাম। নেক্সট, desired capacity, minimum and maximum. Then no scaling policy. Okay, right now no scaling policy. In future, target tracking, that is scaling policy. Scaling policy means whenever it is going to scale, whenever 2 to 3, when CPU utility is more than this. Okay, but right now we are not using, we try to understand the auto scale. Yes, 2 node is going to start, and when I drop any node, it is going to start alternately one more node. Check it. Next option, these are not স্যার ওই মেইনটেনেন্স পলিসিটা যেটা ছিল, সরি হ্যাঁ এটা পরে আসবো। আচ্ছা, সোমবার দিন এটা ভালো না, অন্য
অন্য দিনে করব। নেক্সট 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 details review and autoscaling group. Once it is creating, back to instance and try to refresh. Check it, one running, one pending. Other machine terminated. Right now one running, one pending. So after some times it is also going to, both are running. Okay, if I delete both the machines, last time I delete only one machine, now I terminate. Let's see after terminate what happened. Autoscale is going to check 30 seconds. Once it is down, then from that time to 30 seconds, then autoscale take effects. Okay. One shutting down, rest are terminated. One machine pending, running, one running, another one also going to run after 30 seconds. New instance, but with same capacity. Okay, same application. এই যে downtime-টা যে আছে at this moment, there's a downtime, right, in the application. I mean, so ideally we should reduce that time to check. বলতে ইন্ডাস্ট্রিতে মেনলি 5 মিনিটস করে, মাল্টিপল মেশিন থাকে, সব কটা মেশিন একসাথে কখনোই ডাউন হয় না, ঠিক আছে, 1 বাই 1 ডাউন হয় কখনো কোনো কারণে। আর 5 মিনিটস এই কারণে করে কারণ ওখানে আমরা সিপি ইউটিলিটির উপর করব। সিপি ইউটিলিটি মোর দ্যান 70, দেন লঞ্চ আনাদার ইনস্ট্যান্স। ওকে, এইভাবে তো হবে না, ও তো লঞ্চ করবে। এবার ধরো 70 হয়েছে, 80-তে চলে গেছে, ঠিক আছে, তুমি রাউন্ড টাইম 1 মিনিট দিয়েছো, 80 পর 1 মিনিট চেক করবে, right? তুমি 1 মিনিট দিয়েছো, এবারও 80-তে গেছে, 1 মিনিট ছিল, ও লঞ্চ করছে একটা নতুন ইনস্ট্যান্স, দুম করে নেমে 60-এ চলে এসছে। এবার কী করবে, মেশিনটাকে আবার ডাউন করবে, তাহলে তো লঞ্চ আর ডাউন এই করতে থাকবে অটোস্কেল। লঞ্চ হওয়ার আগেই তো ডাউন করতে থাকবে, তাই তো? যার জন্য আমরা কি করি, 70% করে দিয়ে 5 মিনিটস কন্টিনিউ, 5 মিনিটস মোর দ্যান 70, মানে এখানেই আছে, তখনও ডিসিশন নেয় যে আরেকটা আমি স্টার্ট করবো। ওরকম ফ্লাকচুয়েট তো করতেই পারে, তো ফ্লাকচুয়েটের জন্য ওই রকম টাইমটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। Sir, that CPU utilization we have not given na condition. कंडीशन CPU utilization 70%, 80% we have not given. मैंने दिखाया ना आपको 2 ऑप्शंस, आज ये कर रहा है, ये बाद में करेंगे, सीपी यूटिलिटी हाँ, दिखाया था ना। that was the- हाँ,
देखो 2 machines running. So first option, we have to delete auto scaling group. After that, back to instance. And terminate. After that, template. এটাতে কোনো পয়সা লাগছে না এই টেমপ্লেট বানাতে? হ্যাঁ, এমন কিছু লাগে না এটায়, কারণ স্পেস অকুপাই খুবই লিমিটেড। বাট ডিলিট করে দাও, ক্লিন থাকবে। Then from dashboard you can check what is the status, key pair, load balancer, one load balancer, এটা আমরা বানিয়েছিলাম আগেরটা না একটু no auto scale create it, অটো স্কিল ক্রিয়েটেড বাট দ্যাট লোড Hmm. দিস লোড বালান্স। right? So best option, click on dashboard and check it, what is the status. Auto scaling group 1, instance 8, security group 5, volume। सर स्नैपशॉट अगर रह गया है लेट्स से স্ন্যাপশটও ডিলিট করবে, স্পেস নেয়। डज इट कॉस्ट लाइक হুম, মেশিনের সাথেই আছে। স্যার আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে, ধরুন আমি 5টা ইনস্ট্যান্স দিয়ে শুরু করলাম, অটো স্কেল করা আছে, ঠিক আছে, 5টা ইনস্ট্যান্সেই অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করা আছে ইন আ রিয়েল টাইম এনভায়রনমেন্ট। এবার আমার ইউটিলিটি ইউটিলাইজেশন 70% এর ওপর, আমি যা কন্ডিশন দিয়েছি সেই অনুযায়ী আমার 70% এর ওপর চলে গেল। আরো দুটো ইনস্ট্যান্স অটো স্কেল AWS প্রভিশন করে করে দিল, স্কেল করে দিল। এবার কথাটা হচ্ছে যে নতুন ইনস্ট্যান্স গুলো প্রভিশন হলো সেগুলোতে কি অ্যাপ্লিকেশন ক্লোন হয়ে যাবে নাকি আমাদেরকেই আবার রিকনফিগার করতে হবে? অ্যাপ্লিকেশন সবই তো, অ্যাপ্লিকেশনের সাথেই তো আমরা টেমপ্লেটটা বানিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ তো অ্যাপ্লিকেশন তো ওখানে এমনিই থাকবে, ক্লোন হবার কি দরকার? আমি যখন টেমপ্লেটটা বানিয়েছি, আমি ইনস্ট্যান্স বানিয়েছি, ইনস্ট্যান্সে টেমপ্লেট ইনস্টল করেছি, সরি হ্যাঁ। অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করেছি, দেন টেমপ্লেট বানিয়েছি। হ্যাঁ আচ্ছা, টেমপ্লেটটা হ্যাঁ মানে আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশনটাও হয়ে যাচ্ছে, ওর সাথেই থাকছে। স্কেল স্কেল হয়ে যাচ্ছে। ওকে ঠিক আছে। কি এত চিন্তা করে কি হবে? দিতে তো হবে না, ডিলিট করে দাও, ব্যাস ঝামেলা শেষ। বিল হবে তো মাসের শেষে, কালকে চলেছে মানে মার্চের এন্ডে গিয়ে তুমি যখন এইখানে যাবে বিলিং অ্যান্ড কস্ট, এখানে দেখবে, এখানে তো শো করবে। তুমি যদি বিলসে যাও, 1st মার্চ টু 31st মার্চ, এখানে কিছু বিলিং দেখাবে, ঠিক আছে? না, ও আসে, ও ক্যালকুলেশন করতে থাকে তোমার কি কি ইউটিলিটি হচ্ছে, এই যে কোনটায় কত আসছে। এক মিনিট দাঁড়াও, ভিডিওটাকে অফ করে দিই।